All right. All connections clear. All set. So let me just talk to Tanish. Tanish, can you see me and hear me properly? All connections clear. Yes, All sir. set. So let me just talk to Tanish. Tanish, can you hear me? Yes, sir. All clear? Yes, sir. Thank you so much. So let us share our screen. So today we have to work on reading, and I'm going to be teaching you summary from the passage, and this is a pretty difficult kind of a thing. So let's start karte hain ji immediately. Ajay, you have got something to talk? So let me unmute you. Ajay Sharma, you got something to talk? Unmute yourself. Yes, sir. A very good evening, sir. Hi Ajay, how are you? I'm fine, sir. What about you? Good too. Yes, Ajay. Yeah, so first of all, I just wanted to know that is this session is for the academic one or is it for the general one? It is the General same. training. It is the same thing. The summary Okay. comes in both the cases, academic and general. So no problem at all. All right, all right. It's the same for everybody. Okay. Okay, okay. Thank you so much. All right. Yeah. So we're going to start. I'm going to share the screen now. Yes. Okay. Here is the screen. So I have this YouTube studio. And if anybody wants to come into my Zoom session, all you can do is in the description box down below, there is a link to Zoom session. So you can directly come to Zoom session also, and you can watch me from here as well. We are live there, no problem. But otherwise, in case you wish to come, that's perfectly fine. So we are there as well. So we are broadcasting on Zoom. Via Zoom, we are broadcasting on the YouTube studio. So this is the session which is going on YouTube. Okay, it's the same session with a slight delay of 5 seconds. Right. So let's start with our work. And I want the session to be as interactive as possible. So I have 3 people with me in the studio. One is Ajay, one is Shivani, and one is Tanish. So I request all 3 of you to participate as much as you can, because the more you participate, the better the session will be. तो शुरू करते हैं जी आज का कार्यक्रम, रीडिंग समरी फ्रॉम द पैसेज, जो कि एक बहुत ही मुश्किल तो मैं बोलूंगा इसको, ट्रिकी बोल सकता हूँ, एक बहुत ही ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइप्स है, और अप्रोक्सीमेटली में आधा घंटे से 40 मिनट लगेंगे इसे कंप्लीट करने में. तो इन केस आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Webberz Educomp Limited नाम है हमारा, एक बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है, जरूर विजिट कीजिएगा. ये सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं. एंड नेक्स्ट इज Instagram handle at webberz.in. In case you haven't followed it, please follow it up. It is a very useful page. You can find out everything about all the global examinations on this particular link. This is the Webberz community. मैंने इसका लिंक भी आपको देखे रखा है. इसमें मैं बहुत सी बुक्स almost on a daily basis कुछ ना कुछ शेयर करता ही रहता हूं. Without fail, I keep on sharing things. Today only in the morning, I have shared a lot of stuff. And since morning, I have been busy, putting things in place so that everybody can benefit out of it. And just don't worry. If you're not even a student of Webberz, doesn't matter. It will be benefiting you if you join the community. The link is in the description box below. मैंने सुबह से क्या-क्या डाला है community में, मैं आपको बता देता हूँ. I have added about 1 academic writing task 1. Then I have added general fact thesis for task 2. Then I have added formal words for academic paper. A PDF file is there, and then a YouTube link, which I'm doing it right now. And I took one interview also of Anshdeep Singh, Exam Pe Charcha, that is episode number 15, that has also been broadcasted. He scored 7.5 bands in PTE, which is equal to score of 78. A very good score. And in case you get good scores, I'll be more than happy to get you on my show, and we'll broadcast you live, absolutely live. Okay, so this is for the Webberz community. In case you wish to follow it, for more updates, you can see it here. So for professionals, we have started a new service. एक नई सर्विस हमने शुरू करी है प्रोफेशनल्स के लिए. सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक, शाम को 5 से 7 बजे तक, और 7 बजे से रात को 9 बजे तक हमने नए बैचेस खोले हैं. ये बैचेस लॉरेंस रोड ब्रांच अमृतसर में हैं. अगर आपने किसी ने भी ज्वाइन करना हो इस बैच को, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए. मिस्टर मोहित शर्मा हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हर चीज के लिए, एंड वी हैव टीचर्स सिटिंग देयर टिल 9 PM इन द नाइट.
and they'll be helping you out for English, IELTS, CELPIP, and PTE. And the number is 9779001975. Very effective बैचेस, बहुत शांति होती है उस समय, एंड बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस देखा गया लोगों का इन बैचेस के अंदर। आईएलटीएस रीडिंग समरी, तो सबसे पहले बात आती है जी रीडिंग समरी। तो देखते हैं कुछ टिप्स। इसके टिप्स करने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे अपने लोगों से, वो कैसे टिप्स करते हैं इसके। शिवानी जी अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। हेलो सर, गुड हेलो, इवनिंग। हाउ आर यू शिवानी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, हाउ अबाउट यू? आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी गुड। ओके शिवानी, आप बताइए आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है क्या? यस सर, समरी। क्या प्रॉब्लम आपको आती है? सर सिनोनिम्स नहीं पता लगते हैं सर, कई बार लोकेशन ही नहीं मिलती हमें। क्यों, ऐसा क्यों है? सर शायद लैक ऑफ नॉलेज अबाउट सिनोनिम्स। तो आप कंफ्यूज हो जाती हैं? यस सर। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो आज आपकी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। सो आप इंटरेक्ट कीजिए जितना भी कर सकते हैं। तो आप कौन सा मेथड यूज करती हैं इसको निकालने में, समरी सॉल्व करने में? व्हाट मेथड डू यू यूज? आपने समरी पढ़ी, उसके बाद क्या करते हो? सर कीवर्ड फाइंड करती हूँ, उसके बाद क्या करते हो? सर पैसेज में जाती हूँ, फाइंड पैसेज करती हूँ। गए, फिर ढूंढना शुरू कर दिया, आपको एक Yes. वर्ड मिला, उसके बाद? सर लाइक जैसे ईयर्स वगैरह दे दिए होते हैं, उससे उसमें देख के फिर लॉजिक लगाती है। सर कई बार लॉजिक भी गलत लगता है। लॉजिक भी गलत लग जाता है आपका, ठीक है, फाइन। थैंक यू सो मच शिवानी। सो लेट मी आस्क अ कपल ऑफ मोर पीपल। Ajay Sharma, can you just unmute yourself and let us know what do you do while finding the summary from the passage, like finding the words from the passage and you put in the summary? Yeah, actually sir, जो मैं अभी currently जो मैं trick use कर रहा हूँ, actually first of all I just wanted to tell you that I am a GT student. No problem, same trick apply. Yeah, so actually first प्रॉब्लम जो है वो मेरी वो है टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअली जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 पैसेज ही कवर कर पा रहा हूँ। मतलब कि जो लास्ट पैसेज है वो कवर अप नहीं हो पाता, जो लेंथी वाला होता है। सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स आपसे कवर नहीं हो रहे हैं। यस यस सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो फिलअप्स है उसमें सर मुझे थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि अगेन जैसे शिवानी जी ने बताया कि इसमें सिनोनिम्स का इशू आता है, सेम अगेन मुझे भी वही इशू फेस कर रहा हूँ मैं। आपको भी सेम इशू फेस करने पड़ रहे हैं, राइट राइट यस राइट। सर। ठीक है जी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस फिगर इट आउट, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो लेट अस टॉक टू दिया मेहरा। दिया मेहरा, कैन यू टॉक? Yes, sir. Hi Diya. Diya, you also having a problem? Yes, sir. I'm having the problem in yes, no, not given also, and the summary portion also. In summary also. क्या problem आपको आती है? So actually, I read the whole paragraph and then I start putting the answers which can match easily in my summary. But sometimes my answer got wrong. So, but because of this reason, I read whole passage. But in just 1 hour, I am able to complete 2 passages or 2.5 passages, not 3 passages. Not 3 passages. So basically, you're compromising on your time a lot, right? Yes, sir. So this is the problem that I'm facing right now. Wonderful. So I'm going to take up a couple of sessions online, most probably 10 o'clock in the night after dinner. Everybody's free mind, absolutely. So we'll work on it. So let's talk to Tanish now. Hi Tanish. हेलो सर, गुड इवनिंग। Very good evening. क्या हाल है आपका? बढ़िया सर, आप तो बताएं जी, आपको रीडिंग में आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर एक तो यस नो नॉट गिवन में आती है, ठीक है जी। और एक जो होते हैं जो समरी होती है, जो साथ में बॉक्स दिया होता है उसमें आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है आपको। ठीक है, चलो आप देखते हैं। आज हम करेंगे समरी फ्रॉम द पैसेज और फिगर आउट करते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच तनिष। आप बने रहिए, लाइन पे बने रहिएगा। अभी कैमरा चाहे ऑफ कर दीजिए, बट यही रहिएगा। सो वी जस्ट फिगर आउट एवरीथिंग। ओके सर। तो अब करते हैं जी टिप्स। इसके क्या होते हैं? सबसे पहला टिप समरी का याद रखिए कि वोकैबुलरी बहुत मायने रखती है इसके अंदर। इन केस योर वोकैबुलरी इज नॉट गुड, it is very difficult for you to figure out how it is going to work. We just can't come to know how it's going to work, because अगर आपकी vocabulary ठीक नहीं है तो हमें बहुत issues आते हैं vocabulary के। आंसर ऑर्डर ये सारे सीक्वेंस में होते हैं मोस्टली। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक सीक्वेंस होती है इनकी। तो बड़ी बारी पता है क्या होता है, मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को, कि देखिए आप ना एक क्वेश्चन ढूंढ लो। सपोज थर्ड क्वेश्चन यू फाइंड आउट एंड थर्ड क्वेश्चन इज हियर. Number 2 and number 1 is going to be above that. Number 4, number 5, number 6 is going to be below that. This is the basic sequence order that is there.
Now, you say that every time it's in a sequence. Well, one question can be here and there. That is immaterial. But mostly, I would say 90% of the times, it is in a sequence. So, अपने पास याद रखिए, number 1, good vocabulary. Number 2, sequence. So, let's see the third category now. The third tip. The third tip comes as words from the text questions. Follow the instructions. Now, for example, ऊपर लिखा है, fill 2 words, fill 1 word, fill 3 words. तो आपने वही fill करना है, ये नहीं करना आपने कि ऊपर कुछ और लिखा है, आप कुछ और कर रहे हैं, ऊपर लिखा है 1 word, आप 2 word लिख रहे हैं, तो आंसर सारे आपके गलत हो जाएंगे. Follow the instructions, which is very important. Prediction, ये मैं आपको सिखाऊंगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Try to predict the type of word that you're going to fill at each cap. Prediction is very important. 5th, use clues like logic, grammar. You know, if suppose there's an and there's a blank there, and something. So you come to know there's a vowel, which is going to start with, the word is going to start with the vowel. So, these kind of common sense, bilkul basic common sense works very well. Then you apply logic. Once you fit in the word, you read the whole sentence and you apply the logic. Is it making sense or is not making sense? These things really help. And the next thing is time management. Now, suppose, जैसे अभी हमें दिया ने बताया, अजय ने बताया कि उनके पैसेज पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, which is very very important part of reading. देखिए, इन पॉलिशिंग क्लासेस, अगर आप मेरे पास पॉलिशिंग क्लासेस लगाने आ रहे हैं, जो कि हर एक मंडे को शुरू होती हैं, so उसमें my main focus is only on time management. This is what I do all the time management. What I tell you is to complete your reading in 50 minutes. I know you will cry, you will howl, you will shout, and you will get very disturbed also. ये मैं क्या कर रहा हूँ, 50 मिनट में कैसे हो जाएगी मेरे से 1 घंटे में तो हो नहीं रही है. तो I forcibly make you do it, and I have seen the result. The results are awesome, absolutely awesome. People finish the reading in 55 minutes in the real examination, and they get a very good band score of 8, 9 easily. Time management is a very important part. You have to challenge yourself all the time. Challenge yourself, which is a very important thing. So let's go to the next thing, that is check your grammar. Now, suppose if you've entered one answer, you've written one answer, and the grammar is not matching, make it sure it's correct. Make it sure it's grammatically correct, because if it is not grammatically correct, it's not going to work. The answer is not correct. It has to be grammatically correct. Remember, this is a test of English. So I am going to repeat your tips once again. Vocabulary is very important. Sequence is very important. Follow the instructions. Predict. Use other clues like logic, grammar, etc. Time management, again, a very important thing. If you cannot figure out what's going to come there, leave that question, move ahead. We will come back to it. Don't worry. Don't waste time. And check the grammar. Grammar is very important. In case you fit everything and you find out, भाई एक word की तो grammar ही नहीं बन रही है मेरे से, तो इसका मतलब वो पक्का word गलत है. इस बात का ध्यान रखिएगा. शुरू करते हैं जी. तो आज हम करने वाले हैं California's Age of Mega Fires. ये एक बहुत ही अजीब सा आर्टिकल है, जो कि मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं आता. We hardly have mega fires in India. We hardly have, forest burnings here as compared to what happens in America or California. It doesn't happen like that here in India. That is why we are out of context on what is happening there. For example, take the case of earthquakes. We do have earthquakes, but we don't have disastrous tsunamis like you get in Japan, right? So that context is missing in India. So we cannot figure out by our common sense that what can come here, okay? So we will figure out what is written in the passage. We'll figure it out and we'll find out what is going to happen now. So let me unmute somebody and let's see who can help me out. Ajay, I'm unmuting you. So Ajay, is it possible for you to unmute yourself? Yeah, perfect. Yes, sir. Yes, sir. Ajay, in case you want to put on your camera, you are most welcome to put on your camera. Okay. I'll just give you the rights to put on your camera because you are going to be with me while we handle this particular thing. Okay. So do not mute yourself now. Just remain unmuted till I tell you to. Sure. Okay, Ajay, tell me this. What can you make out of this picture? What can you make out of it? Sir, I believe that कि जो California mega fires मतलब यही आ सकता है कि कहाँ से start हुए हैं. नहीं आपको क्या लगता है कहाँ पे आग लगी हुई है?
जंगल में Cali- आग है, पहाड़ों में है, या घरों को आग लगी हुई, क्या हो रहा है? सर फॉरेस्ट कह फॉरेस्ट सकते हैं, फायर फॉरेस्ट है। में आग लगी। परफेक्टली जी फाइन। तो पहली बात तो आप हमारी क्लियर होगी कि ये मेगा फायर्स जो हैं ये सारी फॉरेस्ट में ही होंगी, राइट? यस मेगा सर। फायर कैन बी समवेयर एल्स आल्सो ना, बट वी आर डिस्कसिंग हियर ऑफ अ फॉरेस्ट फायर। तो ये आप पिक्चर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फॉरेस्ट फायर हो रही है। यस Am I सर। right? यस सर। ग्रेट, वंडरफुल। तो आगे चलते हैं जी। अब आगे समरी फ्रॉम द पैसेज। अब ये पढ़ के मेरे को बताएं क्या लिखा है, पढ़ के बताएं जी। Yeah. So complete the summary below. Choose no more than 2 words from the passage for each answer. So, राइट, सो नो मोर देन कितने वर्ड्स चाहिए? सर 2 वर्ड से ज्यादा नहीं। सो सपोज अगर मैं लिखता हूं रेड चेयर, तो क्या ये मेरा आंसर ठीक है या गलत है? सर रॉन्ग होगा, क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि सर ये 3 वर्ड्स आ जाता है, तो इसमें 2 वर्ड से ज्यादा का है क्वेश्चन की तो डिमांड। अगर मैं इसका ए काट दूं यहां से तब ठीक है? यस सर, फिर एक करेक्ट आंसर कंसिडर होगा। अगर मैं रेड भी काट दूं तब भी ठीक है क्या ये? यस सर, हाँ कंसिडर हो सकता है। कंसिडर हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि माई आंसर इज नो मोर देन 2 words, विच यस। मीन्स my answer can be 1 word or it can be 2 words, right? It cannot be यस three. It cannot be करेक्ट। three. So 1 word or 2 word. Can I use a number here, Ajay? नो सर, यस सर वी कैन चूज द नंबर इटसेल्फ, बट वही अगेन कि 2 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर लेट्स Okay, now सपोज कि अगर ये suppose can I write like this? One chair. Can I use like this? One chair. ये भी तो 2 हो गए। ये कर यस सकता सर, हूँ कि यस नहीं सर, कर सकता हूँ? यस सर। तो मैं 1 को आप ठीक करेंगे? सर मतलब 2 वर्ड्स हो गए, मतलब वन और चेयर, ये 2 वर्ड्स हो गए ना, तो रॉन्ग कंसीडर हो रॉन्ग सकते रॉन्ग। अजय देखो, ध्यान से देखो, ये जो 1 हैं। है ना ये एक नंबर है, ठीक है? ओके तो बड़ी बारी क्या होता है, ऊपर लिखा ही नहीं होता नंबर की ऑप्शन। यहां लिखा होता है चूज नो मोर देन 2 words एंड और अ नंबर। ओके। एंड और अ नंबर अगर दिया होगा ना हम तभी लिखेंगे नंबर, वरना हम नंबर नहीं लिख सकते इसके अंदर। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर, बट आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन कि अगर ये क्वेश्चन की डिमांड होगी तो फिर ये कंसीडरेबल तो होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 chair, दैट इज फाइन। ओके, ओके। ओ एन, ओके ओके, गॉट इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो यू हैव टू मेक इट वेरी श्योर इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है, इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया है। डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? यस सर। आपको क्लियर हो गया अजय? यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है जी, आगे आगे चलते हैं हम, ठीक है? तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट पे। तो अजय आपने ना मेरे को ये पूरा पैराग्राफ का समरी है, ये आपने पढ़ के सुनाना है लाउडली, ठीक है? आराम आराम से पढ़िए, पढ़ के सुनाइए जी। Okay. So experts point out that blazes in California are having more heat, faster speed, and they dash more unpredictably compared with former ones. One explanation is that California's summary is dry dash is below the average point. So another long-term explanation is that hotter and longer potential days occur due to dash. Nowadays, mega fires burn dash the size of forest area, caused by an ordinary fire of 20 years ago. The serious trend is mainly caused by well-grown underbrush, which provides dash for the siege fires. Other contributors are climate change and extended dash. लवली, वंडरफुल। अब ऐसे पढ़ के तो कोई फायदा नहीं हमें होगा। क्यों फायदा नहीं Yes. होगा? अगर हम ऐसे पढ़ लेंगे हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आपने पढ़ने में अप्रोक्सीमेटली 1.5 minute स्पेंड कर दिया है, राइट? हम कैसे पढ़ेंगे? अपना पढ़ने का थोड़ा स्टाइल हम चेंज करेंगे। We'll change our style a little bit. So what we're going to do, we are going to mark the keywords. So Ajay, do you know the meaning of keywords? Yes, sir. Bullet points, I guess. Not exactly. So let me ask somebody else. Diya, do you know the meaning of keywords, Diya? Sir, I think the words that are the most important can be considered as the keywords. Absolutely. The words which are very important are considered to be the keywords. Okay. So Diya, help me out now. So in the first sentence, which starts from experts and it finishes here,
कंपेयर विद द फॉर्मर वंस। मेरे को कीवर्ड बताइए कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर, लाउडली पढ़ के बताइए। Sir, I think experts can be the keyword. Experts can be the keywords. What else? Pointed that blazes in California and having more heat, faster speed, and they more predictably compared with former ones. Blazes in California भी होगा। Blazes in California. Yes. More heat, comma, faster speed, and they dash more unpredictably compared with former ones. Former का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पहला। पहले वाली। Blaze का मतलब क्या होता है? Blaze. Blazes in California. I think something related to fire or heat. आग को ब्लेज ही बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ना इसको ट्रांसलेट करके बता दीजिए हिंदी में, ये क्या कह रहा है, क्या लिखा है इसने, ट्रांसलेट करके बताइए। सर वो कह रहे हैं कि एज पर द एक्सपर्ट्स जो हीट है इन कैलिफोर्निया वो ज्यादा वार्म है, स्पीड उसकी काफी ज्यादा है, एंड डैश मोर अनप्रेडिक्टेबल कंपेयर, और वो ज्यादा आजकल अनप्रेडिक्टेबल है एज कंपेयर टू जो पहले होते थे। एज कंपेयर जो पहले होते थे। वंडरफुल। तो अच्छा, अब ये बताइए, यहाँ पे ना दे वर्ड दिया है, दे डैश, तो इस वर्ड पे जो खाली जगह है यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब आएगा, नाउन आएगा, क्या आ सकता है यहाँ पे? And they dash more unpredictably compared with former ones. सिर्फ इतने को पढ़ के बताइए। They dash more unpredictably as compared to former ones. They dash more unpredictable. Sir, I'm not very sure. वैसे गेस कर लो, मतलब नाउन आएगा कि वर्ब आएगा, यहाँ क्या आएगा? Sir, I think noun. नाउन आएगा। कैसे नाउन आएगा? जैसे मैं कहता हूं they cook more unpredictably compared with former ones. They walk more unpredictably as compared to former ones. तो cook और walk क्या हैं? Verbs हैं, right, absolutely right. तो ये थोड़ी सी अगर हमें जानकारी हो जाए ना इसकी कि यहाँ पे आना क्या है, तो थोड़ी देखो प्रैक्टिस की बात होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत इजीली हमारा काम हो सकता है ये, राइट? चलो अब आगे पढ़ के बताइए, वन एक्सप्लेनेशन, ये भी हिंदी में पढ़ के बताइए, इस पॉइंट तक, यहाँ तक बताइए मेरे को। One explanation is that California summer is dry dash is below the average point. They are saying that they are talking about any one particular explanation that जो California की जो summer होती है that is dry, that is warm, and that below the average point. That is something जो एक average point से कम होती है। यहाँ क्या आएगा? नाउन आएगा कि वर्ब आएगा? डैश इज बिलो। सर आई थिंक नाउन। नाउन आएगा। वेरी गुड। अब आपका दिमाग चल पड़ा है नाउन्स और वर्ब्स को लेके, दैट्स वंडरफुल। नाउन आएगा, एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है, चलो फटाफट थर्ड सेंटेंस पढ़ के बताइए मेरे को, यहां तक पढ़ के बताइए, नाउडेज से पहले। Another long-term explanation is that hotter and longer potential days occur due to, they are talking about another explanation that जो hotter और longer potential days हैं means warm, and potential days मतलब जो ज्यादा जिनमें potential days हैं होते हैं। hotter and longer हो गए, potential days occur due to, यहाँ cause आएगी एक, है ना? इसके कारण हो रहे हैं, यहाँ cause आएगी एक, राइट? Yes, sir. आगे पढ़ के बताइए। Nowadays mega fires burn dash the size of forest area caused by an ordinary fire of 20 years ago. Right, 20 years ago ordinary fire, ये साइज आ गया, हमें कंपेयर कर रहे हैं 20 साल से अब, तो यहां आएगा मेरा कंपैरिजन। Am I right? Yes, sir. तो देखिए थोड़ी बातें हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें ना इन चीजों के ऊपर, तो हमारे सारे आंसर ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत इजी है रीडिंग जी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट पढ़ के बताइए, मैं साथ में कीवर्ड्स भी मार्क करी जा रहा हूं आपके लिए जी। Yes, sir. The serious trend is mainly caused by well-grown underbrush, which provides dash for the siege fires. Yeah, which provides what? Something that is being provided. Something, एक reason provide कर रहे हैं ना? It can be a reason for, यहाँ कोई reason आएगी siege fires के लिए। तो ये देखो, ये siege fire जो है ये
फायर की बात ही कर रहा है। वेल ग्रोन अंडरब्रश होता है जो नीचे झाड़ियां वाड़ियां उगी होती हैं जंगलों के अंदर। जी लास्ट बताइए क्या है? Other contributors are climate change and extended. They are talking about any other contributor that can be written in the blank. जो क्लाइमेट का कोई भी पार्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा। Yes, sir. है ना, एक तो क्लाइमेट का चेंज आ गया और एक एक्सटेंडेड समथिंग हो गया। एक्सटेंडेड क्या आ रहा है? क्लाइमेट का कोई भी एस्पेक्ट ऑफ द क्लाइमेट आ जाएगा। तो ये मेरा प्रिडिक्शन तैयार हो गई। अदर कंट्रीब्यूटर्स हमारा कीवर्ड आ गया। मैंने सारा इसमें कीवर्ड्स वीवर्ड्स मार्क करके रख लिए हैं। राइट जी? Yes, sir. मुश्किल तो नहीं लगा ये? No, sir. इजी लगा है। तो अब इसे देखते हैं हम। तो experts point out that blazes in California having more heat, faster speed, and they dash more unpredictably other than the former ones. तो ये मैंने सारा कुछ मार्क करके, जैसे आपने बताया मैंने वैसे मार्क करके लिखा। अब हम करते हैं प्रिडिक्शन। किस तरह का वर्ड या फ्रेज इस ब्लैंक में फिट होगा जिसकी ग्रामेटिकल सेंस बनेगी और लॉजिक बनेगा। तो मैंने इसे फिट करके देख लिए। तो ये मेरे सेम चीजें जो आपने बोली हैं वैसे ही हमने लिख के यहां डाल दी। तो अब हम देखते हैं जी इसको फिटिंग कैसे करनी है, हमने इसको कैसे करना है। तो मैं ना हमेशा इस बात को हमेशा आपको बोलता हूं, ध्यान दीजिए कि whenever you are doing reading, you predict the answers and then you verify by reading. यहाँ ये आ सकता है, यहाँ ये आ सकता है। It has to be very interactive, very interactive. अगर आप इंटरैक्ट नहीं करते रीडिंग से, आप पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पढ़ी जा रहे हैं, तो आपका दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा और आप बहुत ज्यादा टाइम डिले करेंगे। हमें हमेशा प्रिडिक्ट करना होता है क्या क्या रहा है, व्हाट इज ही सेइंग, व्हाट डज ही वांट मी टू आंसर, डज ही वांट अ नाउन, डज ही वांट अ वर्ब, डज ही वांट अ action, something has to come here, what does he want me to fill in? So that is a very important aspect, हमें देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब हम चलते हैं पैसेज के अंदर और हम देखेंगे किस तरह से हम इसकी हेल्प करेंगे। तो ये देखिए ये पैसेज है और साइड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो आप लोग जो जितने लोग बैठे हैं मेरे पास ऑनलाइन, मेरे जूम रूम के अंदर बैठे हैं जो लोग, वो मेरे को चैट में लिख के इसका आंसर देंगे। और जो हमारे लोग ऑडियंस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, so they will write down in the chat box there. So they will write down the chat box there. Make it sure you interact a lot, otherwise it's not going to work out. So let me just share the screen again. Figure it out. Very quickly figure it out. I want your answers. Hurry up. I want your answers. Read the whole thing. Make sense out of it. I want the answers. Start writing down the answers in the chat box. Vocabulary पे ध्यान रखना. Mainly synonyms. Paraphrasing आएगी. So let me talk to my YouTubers. So Tanish Sharma, wishing you very good evening. Punjabi short status, very good evening. Suraj, very good evening. Amrita Tripathi, very good evening. Deep Kaur Sidhu, very good evening. Gurpreet Kaur, very good evening. Inder Baba, wishing you evening too. Jashanpreet Kaur again, very good evening. And Suraj Behal, very good evening. So इन लोगों ने आंसर्स लिखने शुरू कर दिए हैं. So they are writing down the word spread. So देखेंगे हमारा आंसर क्या है, बट पहले मेरे को चैट बॉक्स में आंसर चाहिए कुछ. जल्दी से आंसर लिखिए. अजय, दिया, राहुल एंड तनिष, आप मेरे साथ बैठे हैं जूम रूम में. प्लीज अपने आंसर्स चैट बॉक्स में टाइप कीजिए. तो मैं चैट बॉक्स को एनेबल कर रहा हूं. चैट बॉक्स मैंने एनेबल कर दिया. फटाफट आंसर टाइप कीजिए. चैट बॉक्स हैज बीन एनेबल्ड. जी देखते हैं. दिया, आपका क्या आंसर है? शिवानी, आप तनिष, आपका आंसर क्या है बताएं? स्प्रेड. स्प्रेड. ओके, तो मेरे को आंसर आए जी. दिया ने स्प्रेड लिखा, राहुल ने भी, अजय ने भी एंड तनिष ने भी. चारों ने ही स्प्रेड लिखा है.
और हम देखेंगे हमारा यूट्यूब के व्यूअर्स ने क्या लिखा है। इंदर बाबा ने लिखा है स्प्रेड, जशनदीप कौर ने स्प्रेड, सूरज बहल ने स्प्रेड एंड हरप्रीत जौहल ने भी स्प्रेड। एक्सीलेंट। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब आंसर फिगर आउट करते हैं। तो मेरा आंसर है जी स्प्रेड। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखो बहुत इजी है ये। सेकंड करेंगे। ये देखो यहां पे नाउन आना है। One explanation is that California summer is dry. Dash is below the average point. Something is below the average point. ढूंढिए आंसर। Something is below the average point. Find out the answer. Remember, synonyms, paraphrasing is very, very important. Very, very important. Very quickly find the answers. Please hurry up. Write down the answers. We don't have a full night. Okay, so let us see what do you have to say here. So we have the answers ready. Ajay, Diya, Rahul and Tanish, please write down. So we have written, Tanish says rain, Diya says rain. Rahul and Ajay write down the answers. यहाँ पे मेरे पास इंदर ने आंसर दिया है रेन, सूरज बहल ने रेन, जशनप्रीत ने रेन, हरप्रीत जौहल ने भी रेन, अजय ने भी रेन दे दिया आंसर, लास्ट इज राहुल ने भी रेन दे दिया आंसर। ठीक है जी। तो अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। अगर हम प्रिडिक्ट कर देते हैं ना आंसर, तो हमारे सारे आंसर ठीक हो जाते हैं और आपका आंसर है रेन, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। एब्सोल्युटली परफेक्ट। देखिए रेन कहां पे दिया है, यहां देख लेते हैं। लेस रेन देन नॉर्मल दिस ईयर, बिलो द एवरेज पॉइंट, बिलो द एवरेज पॉइंट। सो ये मेरा आंसर निकला है जी। वेरी वेरी नाइसली डन। अब नेक्स्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। Another long-term explanation is that hotter and longer potential days occur due to, कोई रीजन आएगी, कोई कॉज आएगी यहां, इसके कारण जो डेज हैं हमारे हॉटर एंड लॉन्गर पोटेंशियल डेज हो गए हैं। ढूंढिए। रेन के बाद में पढ़िए, सीक्वेंस में आते हैं ये, रेन के बाद पढ़िए, आराम से पढ़ के देखिए। सो देखेंगे जी हमारा आंसर क्या है इसका। तो आप लोगों ने चैट में आंसर्स लिखे हैं, लेट मी सी। आंसर लिखा है तनिष ने क्लाइमेट चेंज, अजय ने भी क्लाइमेट चेंज, राहुल ने भी क्लाइमेट, दिया ने क्लाइमेट चेंज, और हमारे जो यूट्यूब में बैठे हैं उन्होंने देखते हैं क्या लिखते हैं। मनप्रीत रंधावा राइट्स क्लाइमेट चेंज। बाकी लिखिए जी, फटाफट लिखिए अपने आंसर क्या है आपके। वी हैव सो मेनी पीपल सिटिंग ऑन यूट्यूब एंड दिस इज माय आंसर। My answer is climate change. It is not climate, it is climate change.
लॉन्गर टर्म क्लाइमेट चेंज अक्रॉस, ये देखिए यहां पे लिखा है क्लाइमेट चेंज अक्रॉस द वेस्ट इज लीडिंग टू हॉटर डेज ऑन एवरेज एंड लॉन्गर फायर सीजन्स। सारी चीज की पैराफ्रेजिंग करके इसने आंसर दिए हैं। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जी, फोर्थ क्वेश्चन, ये है मेरा फोर्थ क्वेश्चन। इसको हम दोबारा से देखने से पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैं फिर से आपको टिप्स रिपीट कर रहा हूं सारे जो हम सबने किए हैं। सो लेट अस रिपीट द टिप्स वंस अगेन because tips is the most important thing here. So I'm going to recap the tips for those people who have just joined us. So let us see the tips once again. So these are the tips. Vocabulary बहुत मायने रखती है, आपने देख ही लिया है, ये सारे सीक्वेंस में आते हैं। Again keep that in mind. Next thing is words from the text questions. कितने words आने हैं, 1 आना है, 2 आना है, ऊपर लिखा होता है इंस्ट्रक्शंस में। प्रिडिक्शन करनी जरूरी, जो मैंने आपको सिखाई है अभी। Other clues like logic and grammar are very important. Time management is very important. Take a guess and move on. Don't waste your time. Check the grammar. Again, a very important aspect. Check the grammar. So अभी हम करेंगे आज का नेक्स्ट कार्यक्रम, that is number 4th question. तो ये हमने पहले कुछ प्रैक्टिस करी और अब हम धीरे धीरे करते हुए क्वेश्चन नंबर 4th पे पहुंच चुके हैं। तो यहां पे कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन देखिए क्या करना है। Figure out the answer and quickly write the answer. Quickly write the answer. इसे ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत ध्यान से पढ़ना है। कंपैरिजन किसका कर रहा है वो देखना जरूरी है। हम खाली वर्ड्स लिखेंगे इसके अंदर, प्लीज वर्ड्स लिखेंगे, वर्ड्स लिखेंगे जी, वर्ड्स। ओके, करके देखते हैं आपने क्या आंसर लिखे हैं। अजय, दिया, राहुल, स्नेहा एंड तनिष, प्लीज राइट डाउन द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Write down the answer to this question in the chat box very, very quickly. Very quickly write down the answers, please. I'll wait for your answers and then move forward. Write down your answers. Write down your answers, please. Quickly write the answers. Okay. So here we are. Nowadays, mega fires burn. Comparison, the size of the forest area caused by an ordinary fire of 20 years ago. And my answer you have written here. Let me see what you've written. Ajay says 10 times. Tanish says acres. Diya says 10 times. Sneha Chawla says 10 times. Rahul says 10 times. Sneha Chawla, very good evening to see you, Sneha, after a very long time. Wishing you a very good evening. देखते हैं जी आपका आंसर क्या आएगा। तो मेरे पास जो ऑनलाइन लोग बैठे हैं यूट्यूब में, उन्होंने क्या लिखा है, 10 टाइम्स। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है, सारे लोग 10 टाइम्स लिख रहे हैं।
तो हो सकता है आंसर 10 टाइम्स ही हो। अरे वाह, आंसर 10 टाइम्स निकला। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। ठीक है, बढ़िया है। दिस इज वेरी ट्रिकी। इफ यू सी 5000 एकर्स भी, 500,000 एकर्स भी दिया है, 10 टाइम्स भी दिया है, तो आंसर इज 10 टाइम्स। सो वेरी नाइस, वेरी गुड। सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग प्रीटी वेल। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बड़ी स्पीड स्लोक पे काम कर रहा हूं, आराम आराम से, मजे मजे से, so we can easily figure it out. Okay, here we are. Now I'm not going to help you here. Just figure out the answer and write in the chat box. Just figure out the answer and write in the chat box. Okay, so we have the serious trend is mainly caused by well-grown underbrush, which provides some, for the siege fire. So dekhte hain kya hai? The unintentional consequence was to halt the national eradication of underbrush. Now, the primary fuel for mega fires. So my answer here is primary fuel. And we have got a lot of people on YouTube writing absolutely perfect answers. And the answer is primary fuel. And here also written everybody's writing it correctly. Ajay, Tanish, very well done. Keep on writing more answers. And here we have Jashanpreet, Daljit, Suraj Behel, Harpreet Johal. Very well done. Primary fuel is the right answer. Daljit Singh also, Jashanpreet, very good. All of them have written very good answers. So we go on the last question now. Last question. So this is my last question, okay? Now again, apply logic as much as you can and then figure out the answer. Okay, now this is very tricky, very, very tricky, because इसमें ना ध्यान से देखना जरूरी है क्या क्या रहा है, क्योंकि सारी लैंग्वेज चेंज की हुई है और बहुत सारी ऑप्शंस देके रखी हैं इसने. सो देखते हैं क्या कहता है. तो अजय ने लिखा है फायर सीजन, तनिष ने भी लिखा है फायर सीजन. सो लेट अस सी व्हाट योर आंसर इज हियर. सो लेट मी कैच द स्क्रीन वंस अगेन. कहता है अदर कंट्रीब्यूटर्स आर क्लाइमेट चेंज एंड एक्सटेंडेड समथिंग. एक तो क्लाइमेट चेंज है और दूसरी चीज एक्सटेंडेड समथिंग, जो चीज बड़ी हो गई है, एक्सटेंड हो गई है, वो क्या है? फर्स्ट इज क्लाइमेट चेंज मार्क्ड बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये तो क्लियर हो गया, क्लाइमेट चेंज है. इन द एवरेज ईयरली टेम्परेचर अक्रॉस द वेस्ट, ये तो फर्स्ट बात आ गई ना. अब एंड के बाद सेकंड बात आएगी. सेकंड इज फायर सीजन दैट ऑन एवरेज इज 78 डेज लॉन्गर. एक्सटेंड हो गया. क्या एक्सटेंड हुआ है?
and my answer here is fire season which has been extended. देखो ये काफी ट्रिकी है, इसको ध्यान से समझो क्या है ये अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का ना इसने ये पार्ट दिया, ये पूरा पार्ट क्लाइमेट चेंज पे दिए, ये सारा एंड वर्ड जो दिए ना वो सेकंड पार्ट पे, एंड समथिंग एक्सटेंडेड समथिंग, ये है सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट होगा और ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड इज द फायर सीजन दैट ऑन एन एवरेज इज 78 days लॉन्गर, यानी एक्सटेंड हो गया फायर का सीजन। मैं तभी बोल रहा हूं कि ये इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं है, हमें समझ नहीं आ सकता ये क्या कंटेक्स्ट है। सीजन उनके फायर सीजन होता है कैलिफोर्निया में, वहां आगे लगी जाती है हमेशा। सो दिस इज द फायर सीजन। सो मैं फिर से रिपीट करूंगा, इन केस आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज हमारा यूट्यूब पे चैनल फॉलो कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, व्हाटएवर, इट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। वी हैव दिस ब्यूटीफुल ब्लॉग, डू सी दिस ब्लॉग, इंस्टाग्राम, सारे मैंने लिंक्स बना के नीचे रखे हुए हैं। और अगर आपने वेबर्स कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, इसको स्कैन कर लीजिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, मैं उसमें रोज की रोज कोई सामान डालता रहता हूँ, बहुत फायदेमंद चीजें हैं ये। हमारे ऑफलाइन बैचेस शुरू हुए हैं प्रोफेशनल्स के लिए 7 बजे से 9 बजे तक, 5 से 7 बजे तक, शाम को 7 बजे से रात को 9 बजे तक, बैचेस फॉर इंग्लिश, IELTS, सेल्फ एंड पीटी। वेन्यू है हमारा लॉरेंस रोड ब्रांच अमृतसर। कांटेक्ट करने के लिए मिस्टर मोहित शर्मा को कांटेक्ट कीजिए 9779001975 पे। टिप्स में वापस रिपीट कर रहा हूं, वोकैबुलरी बहुत जरूरी होती है, आंसर का ऑर्डर, वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, प्रिडिक्ट कीजिए, ग्रामर लगाइए, लॉजिक लगाइए, गेस कीजिए, आगे जाइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए एक पे, वापस आ जाएंगे उस क्वेश्चन के ऊपर अगर टाइम बचा तो। ग्रामर बहुत जरूरी पार्ट होती है। अब ये थे मेरे आंसर। अगर आपके आंसर 6 out of 6 हैं तो यू आर इन वेरी गुड कंडीशन। अगर आपके आंसर 5 या 6 हैं, you are in a very good, I would say you are in an excellent condition. ज्यादा रोने की बात नहीं है, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये मैंने जो पेपर करवाया ना, एग्जाम्स में आया था, अगर आपके नंबर हैं 3 या 4 तो आपकी कंडीशन ओके है, ज्यादा कुछ अच्छी हालत में नहीं है, बॉर्डर लाइन केस है। और अगर आपके 3 से कम है, यानी कि 0, 1 और 2, तो आपकी हालत थोड़ी सी सैड है। तो कृपा करके मेरे से बात कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर देता हूं, आई शेयर माई नंबर, सो इट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू, बिकॉज अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, यू आर इन अ ट्रबल, आई कैन हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग, बट मेरे को बताएंगे तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वरना प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती। तो ये मेरा नंबर है, it is 987-255-2775। और अब कोशिश कीजिए, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं प्लीज उसे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है? डोंट वरी। और अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस में, तो नीचे जूम का लिंक दिया है, उसे क्लिक करें और जूम रूम में आ जाएं, मैं आपकी डिटेल में रीडिंग की प्रैक्टिस दोबारा से करवा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गेट इट डन प्रॉपरली। सो ये मेरा नंबर है, प्लीज नोट करके रख लीजिए, दैट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू, क्वाइट यूजफुल फॉर यू। तो इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको क्लासेस की बात करनी है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, पेपर आ गया, समझ नहीं आ रही, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, सो वी विल फिक्स अप एवरीथिंग फॉर यू, एवरीथिंग फॉर यू। Don't worry, click on the Zoom link below, come to my classroom here, I am here till 11 o'clock, I'll help you out with each and everything. So with this, we finish off our session today, and I hope the session was useful for you. अब ये देखिए पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर हमने फिट करके देख ली हैं, ग्रामेटिकली फिट सारे आंसर्स हो रहे हैं, and it is beautifully done. Thank you so much for attending the session. Good night, bye bye.